तो स्कूल में टीचर को ये बात कहते तो सुना होगा, लीड बाय एग्जाम्पल। लेकिन जब अपने देश की बात आए तो हेलो जी, नमस्ते, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज द इफी एक्सप्लोरर। तो दोस्तों, आज मैंने सोचा आपको दिल्ली में होने वाले रिपब्लिक डे परेड के रिहर्सल्स दिखाऊं, लेकिन आज मैं थोड़ा डिफरेंट सा घूमने आई हूँ। अभी सुबह के 6:30 बजे हैं एंड यहाँ पे मैं दिल्ली में हूँ करंटली एट द राष्ट्रपति भवन साइड, क्योंकि रिपब्लिक डे आने वाला है और यहाँ पर हो रही हैं प्रैक्टिसेस। आपको यहाँ दिखाने लाई हूँ मैं देश की यंगेस्ट फोर्स NCC कैडेट्स। तो ये वीडियो मैं स्पेशली इस यंग फोर्स की लाइफ को जानने और पहचानने के लिए बना रही हूँ। इन बिटवीन देयर रिपब्लिक डे रिहर्सल्स, द कैडेट्स वेक अप एट 4 AM एवरी डे, दे गेट रेडी एंड दे रिपोर्ट एट 5 AM शार्प। मुझे बता सकते हो आप लोग कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह? We're going for practice at KARGIL। मैं काफ़ी एक्साइटेड थी सबसे इंटरेक्ट करने के लिए, स्पेशली द फीमेल कैडेट्स। मैं NCC कैडेट के साथ हूँ बस में इस टाइम। ये लोग मुझे बता रहे हैं कि 14 डेज हो गए प्रैक्टिस करते हुए। बताओ आप कहाँ से हो? From Impal, Manipur। कर्नाटका एंड गोवा। I'm NR से मैम, अरुणाचल लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट, म्यांमार की बॉर्डर। मेरा नाम SUO न्यामलर पंसा है। I'm pursuing BA in English Honors in Women's College, Shillong। My name is Kenmula and I'm from Nagaland। I'm studying in St. Joseph's College, Autonomous Jakama। इस बस में जितने भी कैडेट्स हैं वो सारे कुछ ना कुछ कोर्स परस्यू कर रहे हैं और उन्हीं कोर्स के साथ NCC की ट्रेनिंग इनके रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में चलती है। आप कौन से ईयर से हो? 3rd year मैम। पास आउट होने वाले हो? Yes मैम। सीनियर हो गए। February 19 से हम लोग का एग्ज़ाम है C सर्टिफिकेट का। एम तो नहीं था but I really wanted to join since class 12। I've been doing NCC since class 8, so it's my 7 to 8 years now। मैं जब फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया था उस टाइम पे तो सिर्फ यूनिफॉर्म देख के लाइक आई वांटेड टू वेयर, बिकॉज मेरे दोस्त लोग सभी लोग पहनते थे और उधर पे रिपब्लिक डे परेड लोग होता था, लोकल रिपब्लिक डे परेड। पहले मैं गेम भी करता था, कराटे भी खेलते थे। तो उस टाइम में भी मेरे पेरेंट्स मेरे मम्मी नहीं चाहते थे कि मैं वो सब गेम खेले, बट आई वॉज डूइंग गुड इन स्पोर्ट्स ऑल्सो। तो उस टाइम से मेरी मम्मी ने मुझे भी मतलब इसमें भी अच्छा करेगा, मतलब एक बिलीफ था उसका। कौन सी स्टेट से आप लोग? हमारी 2 कंडीशन चलते हैं, बॉयज़ का गर्ल्स का, और हम साथ में चलते हैं एयर विंग, आर्मर्ड विंग और नेवल विंग। 17 डायरेक्टरेट आर प्रेजेंट हियर। मैं जब भी बॉर्डर एरियाज में ट्रैवल करने जाती हूँ फॉर वॉट्स एट द बॉर्डर, मैं हमेशा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से आप लोगों को इंट्रोड्यूस कराती हूँ। दिस टाइम NCC विच वॉज सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस ड्यूरिंग मेजर वॉर्स विच इंडिया फेस्ड। I, Cadet Ishita Shukla from Delhi Directorate. I'm pursuing BA program in Political Science and Sanskrit from Delhi University. NCC started in the year of 1948, 16 July. In the following year, the Air Wing and Naval Wing of NCC was formed. In 1965 war, we were the second line of defense. As an NCC cadet, we are taught unity and discipline. I've seen and I've been told that this is the best form to inculcate discipline amongst the youth so that they get the training that they can never get anywhere else. So first, when we entered college in our first year of college, we saw all these other college students and we were like,
we don't want to be like them. We want to be different. We want to be something that people look up to, and as NCC, people look up to us. Before joining NCC, I was a little less smart. The most important thing that I learned from NCC is punctuality. 1962 के वॉर में जो सीनो इंडियन वॉर है वहाँ पे रियलाइज करा गया कि आर्मी की शॉर्टेज हो गई थी वॉर के टाइम पे। तो 1963 से एनसीसी की ट्रेनिंग को कंपलसरी कर दिया गया। 1965 के इंडो पाक वॉर, 1971 के बांग्लादेश पाकिस्तानी वॉर में एनसीसी कैडेट्स वर द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। I am Corporal Prerna Talukdar, the state of Assam. Tiadar Talom. I'm from Arunachal Pradesh, Siang district. Surgeon Nimnasala Kakungar from Meghalaya, Shillong. Unmona Neil, and I belong to Titabar, Jorhat, Assam. Our Republic Day camp schedule starts from 5 a.m. We wake up, we line up for our breakfast, and then we get ready for our various activities such as I'm involved in Hall of Fame. 1:30 को हम लोग खाना खाते हैं, उसके बाद फिर से राजपथ वाला राजपथ साइड चला जाते हैं और ड्रिल वाला ड्रिल, कल्चरल वाला कल्चरल। Evening from 5:30, we have our roll call in the fallen area. I am in class 12 and I have to manage my studies for my board exam. So I used to study in the night time. मेरा नाम सोनिका पाटीदार है। मैं MPCG डायरेक्टरेट की हूँ। मेरा छोटा सा गांव है, देहरिया साहू गांव का नाम है। मैं मेरे गांव से एक पहली लड़की हूँ जो NCC ज्वाइन किया है। I'm from the northeastern regions. Once I got my contingent along over here, the exposure has been fantastic. You know, they are interacting with cadets from all over India. So it widens their horizons. They are able to learn about the culture. So whatever we keep speaking about, you know, unity and discipline and those things, they get those ethos of NCC. You know, they really live up to it once they come over here in Delhi and they start interacting and doing all these competitions amongst themselves. रिसेंटली ये भी बोला गया था कि पहले बच्चों को 40-50 किलोमीटर तक जाना पड़ता था एनसीसी की ट्रेनिंग लेने, बट अब कोशिश ये की जाएगी कि बॉर्डर एरियाज में एनसीसी की ट्रेनिंग उनके घर के पास ही दी जाए। एनसीसी का तो ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं लेता था, बट दिस डेज पीपल आर सो गिविंग इम्पोर्टेंस एंड इवन इन कॉलेजेस एनसीसी सब्जेक्ट इज बीइंग इलेक्टिव सब्जेक्ट रखने वाला है अभी। मैं आई यहाँ तक, अब पापा मम्मी भी बोलते कि हाँ बेटा अच्छा किया। मेरी छोटी बहन है, उसका भी बोलते कि हाँ बच्ची को भी एनसीसी ज्वाइन करवाएंगे। आई एम कैडेट रिया शर्मा। आई एम साजन वहीमा। I am Cadet Priti Gupta. इसके बाद आप तीनों को क्या फ्यूचर प्लान है? I want to join army. DRASS, SSB. I also want to appear for this CDS exam and I also want to join force. I aspire to join the armed forces, so hopefully I will. Leading by brightest example to voluntarily serve their country, I'm very happy to meet these unsung warriors, NCC cadets. When I cover such topics for the channel, I hope to spread the most positive aspects of the country in the most inspiring light, and I hope I have made a little bit of that effort through this video in a way that we feel proud of where we live every day. So I hope you like this video. I'll see you in another one very soon. This is Iffy signing off. Bye bye. Namaste.